ആശംസകൾ. ഈ പര്യടനം തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് 15 കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു എംപിയും 8 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടുത്തെ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും വേദനകളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. എനിക്കിപ്പോ ഇതൊരു മത്സരമായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്, ഇതൊരു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു നിയോഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, ഇവിടെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്നും എന്റെ ഒരു നിയോഗമാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നിയോഗമാണ്. ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ 5-6 കൊല്ലത്തിൽ ആര് എന്ത് ചെയ്തു? 24,000 വീടുകള്, 4 ലക്ഷം വീട്ടിൽ കുടിവെള്ളം, 9 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് PM ആയുഷ്മാൻ കാർഡ്. അതെല്ലാം നരേന്ദ്രമോദിജി അദ്ദേഹം 10 കൊല്ലത്തിൽ ചെയ്ത പണിയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു സൈഡിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ CPI CPM, മറ്റേ സൈഡിൽ അവർ തന്നെ ഇന്ത്യ അലയൻസിന്റെ ഒരു പാർട്ട്ണറായ ഒരു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി UDF. അവർ എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് ജനങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഗരീബി ഹട്ടാവോ ഗരീബി ഹട്ടാവോ ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന് 65 കൊല്ലം പറഞ്ഞ 2 പാർട്ടികള് ഗരീബി എങ്ങോട്ടും പോയില്ല, അവരെവിടെ ഒത്തിയിരുന്നു. അതിനെല്ലാം മാറ്റാനാണ് ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. നരേന്ദ്രമോദിജി ജൂൺ 4-ാം തീയതി 3-ാം തവണ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുമ്പോൾ 400 ചില്ലറ സീറ്റിൽ 1 സീറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ആവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യണം, മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം, നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, നന്ദി, ജയ് ഹിന്ദ്. Therefore, these are bankrupt parties, bankrupt of ideas, and are going to play no role in the future of India. BJP and Prime Minister Narendra Modi has an absolutely compelling vision for India and for India's youth and for India's women, and that is what the people of India want. So Congress has themselves admitted that BJP has come to the second position, and Thiruvananthapuram Shashi Tharoor recently said that BJP has raised and it's a very strong competition. Look, Shashi Tharoor did not give the BJP any credit. The people of Thiruvananthapuram will take the BJP from number 2 to number 1, and we will certainly win the seat. Not because Shashi Tharoor wants it or does not want it, or because Tagav Pinarayi Vijayan wants it or does not want it. It is because the people of Thiruvananthapuram are fed up of both these parties, and they want change, and they want progress, they want development, they want jobs, they want investment, just like what is happening in the rest of the country. So Shashi Tharoor and Pinarayi Vijayan, his India Alliance partner, need not comment about it. The people of Thiruvananthapuram will decide. So what is the message you want to give to the contenders, opposition contenders as of today? Message to whom? To your contestants here. I don't have any message to them. I am not like them. I don't talk to them. I talk to people. I serve the people of Thiruvananthapuram, and I am very happy meeting the people of Thiruvananthapuram and serving them. I have promised them the next 5 years I will do what the last 15 years their MP has not been able to do, and what the last 20 years CPI and CPM have not been able to do. MP है जो मानते हैं कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी चिट्ठी लिखना है। यहाँ पे ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आया है, या ना यहाँ पे ना तो कोई काम या जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और एक तरह से 10-15 साल से एक ब्रेक लगा हुआ है यहाँ के अर्थव्यवस्था पे। यहाँ के बच्चों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी बाहर इंडिया में हर जगह पे इतने सारे अवसर और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ये UDF और LDF जो इंडिया अलायंस के 2 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे एक ढोंग रचा रहे हैं कि वो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी है। एक्चुअली दोनों ने मिलकर केरल का बर्बादी कर दिया है 65 साल से, और तिरुवनंतपुरम में तो एक MP 15 साल से बैठे हुए हैं, और 15 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं तिरुवनंतपुरम को बार्सिलोना बनाऊंगा, मैं तिरुवनंतपुरम में ये करूंगा वो करूंगा। और आज जब लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, वो कहता है कि मेरे पावर में कुछ नहीं है, मैं जब मंत्री था मैं कुछ नहीं कर पाया,
उसके बाद मैं ऑपोजिशन में हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मुद्दा बड़ा साफ है आज लोगों के सामने। आपको एक नरेंद्र मोदी जी का मंत्री चाहिए एज एमपी, या जो 3 बार साल में लेटर लिखते हैं या 2-3 प्रश्न पूछते हैं, ऐसा एमपी चाहिए। और लोग बदलाव चाहते हैं, और यहाँ पे जो नहीं हुआ है 15 साल, वो आगे देखना चाहते हैं कि वो होता। आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लेटर एमपी बन के रह गए हैं? स्पष्ट है, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि 15 साल में कुछ हुआ नहीं है। काफी सारे उन्होंने वायदे किए थे, कुछ नहीं हुआ। सर एक बात बताएं कि जो इंडिया गठबंधन है, आपने देखा होगा कि पूरा दक्षिण एक तरीके से उनका स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन यहाँ पे आके इंडिया गठबंधन भी खत्म हो जाता है। देखिए, कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। ये क्या है, इन्होंने एक तरह से बहुत बहुत सालों से लोगों को गरीबी में रखकर लोगों को दबा के रखा हुआ है। यहाँ पे आप जानते ही हैं कि पिछले 7 महीने से केरल सरकार ने ना पेंशन देने के लिए उनके पास पैसा है, ना सैलरीज उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो 10 साल में काम किया है, तिरुवनंतपुरम में या केरल में या तमिलनाडु में, जहां पर भी लोग पहचान गए हैं, और लोग चाहते भी हैं कि एक नया ऑल्टरनेटिव बने और यहाँ पे भाजपा का एक प्रेजेंस या फुटप्रिंट ज्यादा बढ़े। वंदे भारत मेट्रो जो इसको वंदे भारत ट्रेन हो, स्पीड ट्रेन की बात हो या फिशरीज की बात हो, हर चीज के लिए पीएम ने इनिशिएटिव लिया है। एकदम। आपको लगता है कि ये सभी चीजें वर्क करेंगी यहाँ की लोकसभा में? हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में खासकर जो 25,000 घर बनाए गए हैं, जो 9 लाख लोगों को पीएम आयुष्मान कार्ड मिले हैं, जो इतने सारे लोगों को मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन कोविड के दौरान उनको मिला था, जहाँ पर 4 लाख घरों में पिछले 3 साल में घर घर जल मिला है। तो लोग सब कुछ जानते हैं। ये जो ऑपोजिशन पार्टी विश्वास करते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति जो वो चलाते हैं, जैसे मैंने कहा, हाल ही में कहा कि हम जब इलेक्शन के टाइम पे विकास और डेवलपमेंट की बात करते हैं, काम और मजदूरी या एंटरप्रेन्योरशिप या नौकरी के बारे में बात करते हैं, ये लेके चले जाते हैं सीए, ये बोलते हैं बीफ, ये बोलते हैं मणिपुर, क्योंकि उनके पास ना तो कोई नया आइडिया है, ना कोई आइडिया है कि देश के लोगों के जीवन में कैसे बदलाव लाए, कैसे उनको आगे बढ़ाएं। वो उस इश्यू पर, मुद्दे पर वो कुछ डिबेट या बोलना चाहते ही नहीं है। इसीलिए हर बार आप देखिए, इंडिया अलायंस की जो भी पार्टनर होगा, वो कोई और मुद्दे के बारे में बात करेंगे, ना कि विकास के बारे में या विकसित भारत के बारे में या डेवलप कंट्री बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है उसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये जो इंडी गठबंधन के जो डायनस लोग हैं, देश को पीछे लगाना चाहते हैं।